Hello everyone, this is me Akanksha and today we are going to talk about a bill which was passed in Lok Sabha, that is Transgender Protection of Rights Bill. This bill was under discussion from a very long time. There was a lot of criticism and even now the community does not seem to be happy even after this bill was passed. So we will discuss these all things in detail. So moving on to our next slide and we will see the definition of transgender. So transgender is an umbrella term used to describe person whose gender identity, gender behavior or expression does not conform to the behavior typically associated with the sex. A transgender could be a female at birth who identifies with male or male at birth who identifies with being a female. Transgender people are individuals of any age or sex whose appearance, characteristics or behavior differ from a stereotype about how men and women are supposed to be. Transgender people have existed in every culture, race and class since the story of human life has been recorded. So transgender ज़रूरी नहीं है कि वो किसी हिंदू फैमिली से बिलोंग करेंगे या फिर किसी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करेंगे. वो किसी भी रेस में हो सकते हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर के हो सकते हैं. In India, there are a host of social cultural groups of transgender people like Hijras, Kinnars and other transgender identities like Shiv Shakti, Jogtas, Jogappas, Ardis, Sakhi, etc. You might have seen the serial Shakti. अगर आपने एक सीरियल देखी हो शक्ति जो कि पूरे ट्रांसजेंडर की स्टोरी पे बेस्ड है एंड उसमें दिखाया गया कि कैसे एक ट्रांसजेंडर को अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है वाइल इट वाज बॉर्न. तो उसमें टोटल एक सोसाइटी के कितने कैसे वो नॉर्म्स बच्चा फॉलो कर पाता है, नहीं कर पाता, एक ट्रांसजेंडर को जब एक फैमिली में रखा जाता है तो क्या क्या इश्यूज़ वो फेस करता है, वो सारा उस सीरियल में डील किया गया. सो यू कैन वॉच दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट topic, that is India's most recent census conducted the first official count of transgender people and the result was more than 4,90,000 people. It means कि out of the total population of India 4,90,000 people are transgender. Moving on to our next slide. Rights of Transgender Person Bill. The Lok Sabha passes the Transgender Person Protection of Bill 2016 after certain amendments. Total 27 amendments were made. And now, before talking about the provisions of the bill, let's see how legislation have evolved over a period of time in this matter. First, the recognition of gender, which was denoted as other, apart from the male and the female, was recognized in 2009. And then, in 2013, setting up of expert committee to examine the issues related to the transgender person. जितने भी issues एक transgender एक society में face करता है, चाहे social stigma के रूप में उसे देखा जाए या फिर discrimination हो, employment, education, हर एक field में जहाँ भी एक transgender people issue face कर रहा है, उन सब के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो उस इशू से डील करेगा. नेक्स्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट गिविंग recognition in 2014. So the Supreme Court actually recognized transgender person right to self-identification and whether they feel they are male or female or the third gender. In 2014, Rights of Transgender Person Bill was introduced as private member bill at Rajya Sabha where it was passed, but this bill was never debated in Lok Sabha. Finally, the bill had many progressive clauses and the bill was introduced in 2016 in Lok Sabha, and after this the bill was passed by Lok Sabha with 27 amendments in 2018. Moving on to the next slide. Supreme Court of India in NALSA versus Union of India. So what is NALSA? National Legal Service Authority 2014. In this, the Supreme Court gave the landmark judgment, which was no social recognition, which protected the rights of transgender by recognizing the by giving them social recognition. Pre-existing Indian law only recognized the binary gender of male and female. Gender assigned at birth determined his or her rights in relation to marriage, adoption, inheritance, succession, taxation and welfare. The community faced discrimination in various areas of life, and this judgment protected all these issues of transgender.
So what was the result of this judgment? The third gender will be considered as OBC and they will be given all right which is given to OBC. Now the Supreme Court also said state and the center will provide social welfare scheme for third gender community and run a public aware campaign to erase a negative public image. Supreme Court also said that the state must provide special public toilet and provide assistance for the special medical issues. It means कि सबसे पहले उन्हें OBC की जितनी रिजर्वेशन दी जाती है OBC कैटेगरी को उतनी ही रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को दी जाएगी. एंड द नेक्स्ट इज़ कि उनके लिए पब्लिक टॉयलेट बनाई जाएगी, स्पेशल पब्लिक टॉयलेट. एंड देन उनको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी. पब्लिक अवेयरनेस इनफैक्ट कंपेन चलाया जाएगा सोसाइटी में ताकि अवेयर रहें आजकल के जितने भी बच्चे हैं या फिर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जो सोसाइटी हमारी वो अवेयर हो ट्रांसजेंडर के राइट्स से और कैसे उनके इश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है. ये सारे चीज़ों से समाज को भी अवगत कराना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर. क्या क्या प्रॉब्लम एक ट्रांसजेंडर फेस करता है सोसाइटी में? डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है. उसे कभी भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ की एक सोसाइटी एक गैदरिंग होती है वहाँ पे उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है. एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है. अपनी फैमिली से उन्हें अलग कर दिया जाता है. मेडिकल फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है. देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज अडॉप्शन, क्योंकि शादी दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज इवन अडॉप्शन. उन्हें कोई बच्चा गोद नहीं दिया जाता है जस्ट बिकॉज ये माना जाता है कि उनके पास मदर वाली फीलिंग नहीं है, कंसर्न नहीं है. So a 2007 study showed the percentage of Hijras who reported forced sex is 46%, physical abuse is 44%, verbal abuse is 56%, blackmail for money is 31%, and the threat to life is 24%. So you can see how they are being degraded in our society. Moving on to the next slide. हाईलाइट्स ऑफ दिस बिल. एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले आता कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी है. अगर कोई भी ट्रांसजेंडर इंसान चाहता है कि उसे जॉब चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसे पूरा राइट है कि वो कहीं भी जॉब ले सकता है. सेकंड इज सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. थर्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज अ प्रूफ. उसे सर्टिफिकेट दिखानी होगी अपनी आइडेंटिटी की डैट ही इज़ और द पर्सन इज़ ट्रांसजेंडर. तभी वो उससे रिलेटेड जितने भी रिजर्वेशन है उसे वो ले सकता है, उसे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे. अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो सारे रिजर्वेशंस जो भी बेनिफिट ओबीसी कैटेगरी को दी जा रही है वो ट्रांसजेंडर को नहीं मिलेगी जब तक कि उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ ना हो. और आइडेंटिटी प्रूफ उसे तभी मिलेगी जब उसे एक स्क्रीनिंग के तहत गुजरना पड़ेगा. और उस स्क्रीनिंग में एक मेडिकल ऑफिसर होंगे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, एक साइकाइट्रिस्ट होंगे एंड द पर्सन हिमसेल्फ. लास्ट इज ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में एक ट्रांसजेंडर वर्क कर रहा है तो वहाँ पे उसके लिए एक पर्टिकुलर कंप्लेंट सिस्टम बनाई जाएगी जहाँ पे वो जो भी इशू फेस कर रहा है ट्रांसजेंडर किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में, उससे डील किया जाएगा. इनफैक्ट अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो सोसाइटी में कंप्लेंट बॉक्स रखी जाएगी जहाँ कि उसके इशूज़ को डील किया जाएगा. एंड देन टू एस्टेब्लिश अ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर. एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी ट्रांसजेंडर के लिए ताकि उसके इश्यूज़ को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम. क्राइम टू पुश ट्रांसजेंडर पर्सन इनटू बेगिंग. अगर किसी ट्रांसजेंडर को आप बेगिंग के लिए फोर्स करें देन इट इज़ अ क्राइम. the right of transgender person to live with their families without exclusion. पहले होता था कि ट्रांसजेंडर अगर फैमिली में नहीं रहना, फैमिली में जब वो जन्म लेते तो फैमिली से अलग कर दिया जाता था. बट अब अलग करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी. विदाउट कोर्ट ऑर्डर यू कांट टेक दैट चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम देयर फैमिली. आप उसको अपने फैमिली से अलग नहीं कर सकते हो. कंसर्न विद द रिसेंट अमेंडमेंट. आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन मिलेगी. रिहैबिलिटेशन. अगर फैमिली ने कोर्ट से परमिशन ले लिया है कि हम इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, तब कोर्ट उसे रिहैबिली सेंटर सेंड कर देगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर. नाउ conclusion, the community will no longer need to hide their identity to be a part of society, and they will be able to pursue their education, get job and participate as equal citizen. This is an important step for building an inclusive, accessible and diverse India. As we are talking about the unity in diversity, then why we are excluding transgender? We should unite together and make India a prosperous and diverse country. At last, this is my references and thank you for watching.